जय जगन्नाथ सांग मैंने मु स्वागत करुच्ची लिफ्लेक्स आउट वीडियो आज आम देखा सोर्सेस ऑफ इनफॉरमेशन। देख प्रथम इनफॉरमेशन विषय किसी जानदबा वर्ड इनफॉरमेशन जोटा आम देखुचु तार डिफरेंट टाइप मीनिंग आसे जमी नॉलेज इनफॉरमेशन अंडरस्टैंडिंग मेसेज डाटा। तो इनफॉरमेशन बहुत गुड़े ह्यूमन एक्टिविटीज रु जनरेट होता है इंडिविजुअल्स रु ऑर्गेनाइजेशन रु बहुत सोर्सेस रु जनरेट होता है अलग अलग पर्पस में। सो इनफॉरमेशन इज द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू ए मीनिंगफुल फॉर्म। तो ताको आमे कोन कहछो इनफॉरमेशन। जेते आमे आसीबा सोर्सेस ऑफ इनफॉरमेशन पय तो कोन देखिबा ए डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म कैन बी ए सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन। ओके तो आकु कोन करा जायछे रंगनाथन कोन गला ताको डिफरेंट पॉसिबल वे रे डिवाइड करिया को कारण यूनिवर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस रे भी करि परंती ना फिजिकल फॉर्म बेसिस रे नेचर ऑफ प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन पर्पस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट बहुत गुडी वे रे साको कैटेगराइज कर परन। तो बेसिकली हमर डिफरेंट क्लासिफिकेशन थ्योरी गुडा देइ चंदी एग्जाम रे एथरु क्वेश्चन आसे अकॉर्डिंग टू रंगनाथन से कौन करथिले तीनटा कैटेगरी क्लासिफाई करथिले कौन कौन थिला थ्री टाइप्स से क्लासिफाई करथिले। प्रथमटा थिला कन्वेंशनल कन्वेंशनल रे आछिबो बुक पीरियडिकल पब्लिकेशन गुडाक देन मैप आटलास ये सब गुड़ाक आसो कन्वेंशनल। नेक्स्ट थिला तांकर न्यू कन्वेंशनल न्यू कन्वेंशनल रे आस्तुला स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पेटेंट ये सब गुड़ाक। देन आसिला नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रे आसीबो माइक्रोस्कोपी ऑडियो वीडियो बा ऑडियो विजुअल। तीन टाइप है तापर आ गोटे टाइप भी से देथिले चारटा टाइप ही जियो तांगर मु तीनटा रेफर कर देथिली पूर्वरु सेटा होचे मेटा डॉक्यूमेंट एडा होचे हमरा डायरेक्ट रिकॉर्ड unmediated by human mind unmediated by human mind। देखो एग्जाम रे कौन क्वेश्चन आसे एग्जाम रे या क्वेश्चन आसे जे रंगनाथन केते टाइप रो करथिले एडा फोर टाइप से जीवो। देखो सोर्सेस ऑफ इनफॉरमेशन को रंगनाथन फोर टाइप्स रो क्लासिफाई करथिले। देन जे देखिबा अन्य जो क्वेश्चन आसे एडा जदी फास्ट नै जीवा अन्य भी बहुत जण अछंती जे माने क्लासिफाई करिथिले आ जण होचंदी सी डब्ल्यू हैंसन से क्लासिफाई करिथिले दुईटारे गोटे थिला प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आसियो कोन बुक्स जर्नल्स थेसिस ट्रेड लिटरेचर एक्सेट्रा। ओके सेकेंडरी आसियो abstracting indexing and indexing journals then citation indexing
citation, indexes, survey ए सब गुड़ाक जाऊला सेकेंडरी। आम जो पढ़ुचु प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एटा किए देथिला हमरो एटा देथिले डेनिस ग्रेगन। ए देथिले तीन टाइप रो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। जा विषय आम डिटेल रे पढ़िया एटा तो हला। देन देखो आकु आम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को को बेसिस रे आम क्लासिफाई करूछु। देखो आम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई को बेसिस रे करूछु। फर्स्ट तो तार नेचर अनुसार जदी क्लासिफाई कर जाय नेचर बा फॉर्म अनुसार, देन बाय लेवल और डिग्री। तो नेचर अनुसार कौन करे छी देखो डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस, नॉन डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। डॉक्यूमेंटरी जो गुड़ाक रिटेन बा रिकॉर्डेड मटेरियल गुड़ाक आसीबो, नॉन डॉक्यूमेंटरी ओरल बा ह्यूमन सोर्सेस गुड़ाक आसीबो जेमदी एक्सपर्ट ओपिनियन, ओके रेडियो ए सब गुड़ाक। देन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स रे आसीबो डाटाबेस, वेबसाइट, सीडी-रोम्स ए सब गुड़ाक। देन जदी हमें डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस बा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अनुसार जदी क्लासिफाई करबा तो देखो बाय कंटेंट कौन होची। बाय कंटेंट आमे कौन करछु तीन टाइप रो क्लासिफाई करछु। जदी हमें एडर नेबा बाय कंटेंट कौन हबो प्राइमरी सोर्सेस जोडा ओरिजिनल अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी रे प्रोसेस्ड बा ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, टर्शियरी रे कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन जोडा प्राइमरी और सेकेंडरी रो कंपाइल होची। एटा जीवो बाय कंटेंट जदी हमें देखबा। बट जदी हमें कौन करबा आ गोटे मु एठी कहि दोची बाय फिजिकल फॉर्म जदी देखबा बाय फिजिकल फॉर्म तबे आमे दी टाइप रो करि परिबा। गोटे करि परिबा पेपर बेस्ड आ गोटे करि परिबा अदर सोर्स ऑन अदर मीडिया। जदी फिजिकल फॉर्म रे जदी क्लासिफाई करियो चाहो एथिला बेसिक क्लासिफिकेशन गुडा को। नेक्स्ट आमे देखिबा डिटेल रे। ता पूर्वरु प्रथमे इंफॉर्मेशन सोर्स कोन देखिनी कोन देछि डेफिनेशन। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन any medium channel or document that provide information needed by a person, researcher can be termed as a source of information. Sources of information can be classified into two ways: level of processing, form of nature. तो तुमको information source आ तार क्लासिफिकेशन विषय बेसिक आइडिया हो जाइथिबो। देन कोन करबा आ विषय टिके डिटेल पढिबा। फर्स्ट देखिबा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Primary source contain original first-hand information that is not derived from any other source, right? They represent new knowledge at the time of their creation. जो समय नुआ knowledge create होची सेतरे किछि भी other things किछि involvement नाही। Original माने तमे गोटे डिजाइन बनैलो जोटा क्रिएट करछो सेटा होची तमरो कोन primary source. It is not derived from other sources. तार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा कौन ओरिजिनल, फास्ट हैंड, न्यू नॉलेज, करंट, नो एनालिसिस, स्कैटर्ड, सिग्निफिकेंट, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट टू सर्च, क्रेडिटेबल। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स विषय देखिबा। चलो तो डेफिनेशन कौन देछि देखो एग्जाम रे डेफिनेशन तो किछि आसीबोनी बट हमको मीनिंग बुझियो पड़े जे प्राइमरी सोर्स काहा को कहबा। ओरिजिनल फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जोटा कि आगरो को जगह भी पब्लिश हैनी, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन को हमें कौन कहि परिबा प्राइमरी सोर्स को ताको न्यू नॉलेज कहि परिबा कारण ये सब बोले नुआ नॉलेज को प्रेजेंट करे प्राइमरी सोर्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। द ऑथर डायरेक्टली रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिव वर्क। आर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा देखो असला ओरिजिनल माने नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द और बेस्ड ऑन अदर सोर्सेस ना कंप्लीटली न्यू आ ओरिजिनल कंटेंट। देन असला फास्ट हैंड ना इंफॉर्मेशन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु कंडक्टेड द रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन बा जीएसए रिसोर्स को क्रिएट करछ। न्यू नॉलेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम
तो नुआ नॉलेज क्रिएट है सेटा आगु रिपोर्ट है adds to the existing body of the knowledge. Then asila current represent the latest research findings at the time of publication. Then asila unprocessed or raw data finding is presented without evaluation, organization or interpretation by other. माने किछि ऑर्गेनाइज ही नथिबो आउ एथिरे गोटे जिंस भी आमे लोकेट कला बेले टाइम कंज्यूमिंग आउ इंफॉर्मेशन गुडा कोन स्कैटर्ड ही थिबो सिस्टमैटिकली किछि ऑर्गेनाइज ही नथिबो हाई स्कॉलरली वैल्यू मोस्ट ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ रिसर्च डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर देन टाइम कंज्यूमिंग देखिले डिफिकल्ट टू सर्च जेतु एटा स्कैटर्ड फॉर्म रे अछि ऑर्गेनाइज ही कि नै इंडेक्स ही कि नै तो गोटे गोटे जिनस सर्च करिया को हम मल्टीपल चैनल थ्रू जिबो पड़ियो मे बी अनपब्लिश्ड सम प्राइमरी रिसोर्स किछिटा प्राइमरी रिसोर्स थाए जोडा कि पब्लिश न थाए अनपब्लिश थाए जेंदी लैब नोटबुक्स पर्सनल करेस्पोंडेंस जेंदी लैब रे जो माने साइंस पढ़छो केमिस्ट्री बा फिजिक्स लैब रे तमे नोट करो बट सेटा पब्लिश होई कि नहीं लैब नोटबुक बा पर्सनल करेस्पोंडेंस कोथि ए सब गुडा कोन अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट may not be formally published but सेगुडा भी कोन है परिबो प्राइमरी सोर्सेस एग्जांपल्स किछरा देखो रिसर्च बा ओरिजिनल आर्टिकल्स जेने पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स गुडा को जो गुडा न्यू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बा थ्योरेटिकल फाइंडिंग्स शो करे जेने एग्जांपल देछि एन आर्टिकल इन नेचर साइंस और IJLIS देन थीसिस एंड डिसर्टेशन ओरिजिनल रिसर्च सबमिटेड फॉर PhD थीसिस बा डिग्री पे जो सबमिट करे जाए जो थिरे नुआ नॉलेज कंटेंट था जोड़ा सब स्टूडेंट जी भी जहाँ डिस्कवर करछि देन आसिला पेटेंट्स होछि लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द न्यू इन्वेंशंस किछि भी नुआ इन्वेंशन कलो किछि नुआ क्रिएशन डिजाइन हला मशीन रो पार्ट्स डिजाइन करो मशीन रो बॉक्स डिजाइनिंग सब गुडा कोन पेटेंट्स रहे एग्जांपल नै जो कोको कोला की थम्स अप तांकर रेसिपी रो पेटेंट अछि जैसे रेसिपी आउ के बने परिबोनी मेडिसिन गुडा जो मार्केट में से सब मेडिसिन रो मेडिसिन कंपनी माने पेटेंट करंती ओके देन आसला कॉन्फ्रेंस पेपर जोडा प्रेजेंट हुए फर्स्ट टाइम पे नुआ रिसर्च किछि एकेडमिक कॉन्फ्रेंस रे माने जर्नल रे पब्लिश हेबा पूर्वरु जदी माने कोठी प्रेजेंट हुए पेपर गुडा को कॉन्फ्रेंस रे से गुडा भी आसीबो प्राइमरी देन टेक्निकल रिपोर्ट्स जो लैब रिपोर्ट्स गुडा को DRDO इसरो नासा बा वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दियंती प्राइवेट भी दियंती टेक्निकल रिपोर्ट्स एगुडा कमर्शियली पब्लिश न होई पारे बट एगुडा भी कोन प्राइमरी सोर्स हो जाए देन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन जिंदी टेक्निकल स्टैंडर्ड गुडा को ISO BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ASTM एगुडा कोन मटेरियल मेथड और स्टैंडर्ड रो जो प्रोसेस गुडा डिफाइन करंती एगुडा को भी प्राइमरी आसीबो ट्रेड लिटरेचर एथिरे प्रोडक्ट कैटलॉग आसीबो ब्राउचर्स प्राइस लिस्ट जो थिरे की प्रोडक्ट रो स्पेसिफिकेशन थिबो मैन्युफैक्चरर डिटेल्स थिबो ओरिजिनल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन थिबो देन लैब नोटबुक जोडा देखुतले हैंड रिटन बा डिजिटल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एसो गुडा कोन देन मैन्युस्क्रिप्ट्स ओरिजिनल हैंड रिटन टेक्स्ट हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन आर्काइव also authors original unpublished text before publication then asila government documents जेमि policy paper census data gazette notification ए सब गुडा भी प्राइमरी सोर्स हो जाए then original cartographic works जेमि मैप atlas ए सब गुडा भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रे चले जाए तार एग्जांपल ए सब जीवो देन देखियो हमें सेकेंड रिसोर्स देखो एबे डिटेल जाउनो टिके देखुचो इन डेप्थ जीबा सेपरेट यूनिट अछि डिटेल देखियो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रे कोन आसीबो प्रथम डेफिनेशन देखिने तापर डिटेल सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस देखो सेकेंडरी सोर्स केतेबेल तयारी हो जेतेबेल प्राइमरी सोर्स जोटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होची ताको हमें कोन ऑर्गेनाइज कलु एनालाइज कलु इंटरप्रेट कलु तो सेटा कोन हे गला सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हे गला तो एथिरे किछि न्यू नॉलेज किछि न थाए बट प्राइमरी सोर्स डा इमिति ऑर्गेनाइज होता है जो ठी हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन गुडा को इजीली फाइंड करि परिबो
तो it serves as a bridge between researcher and primary source, saving a researcher time. तार characteristics कौन कौन देखियो मिले? Derived, organized, processed, easy to search, save time, comprehensive, retrospective, selective, good coverage, builds on original. तो derived कहीं कहला information निया जाइछि कोठो प्राइमरी सोर्स रो ताको कंडेंस करा जाइछि, ऑर्गेनाइज करा जाइछि और इंटरप्रेट करा जाइछि, सेते को डिराइव्ड कुआ गला. देन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक. देखो प्राइमरी सोर्स जन ले ताको स्ट्रक्चरल फॉर्म रे ऑर्गेनाइज करे जेंति अल्फाबेटिकल हैला बा सब्जेक्ट वाइज बा क्रोनोलॉजिकल मैनर रे. देन ताको प्रोसेस करा जाइछि, इवैल्यूएट, एनालाइज. ओके, आदर कोन है इजी टू सर्च, सेव टाइम ऑफ द रिसर्चर बा रिलेवेंट यूजर्स. comprehensive coverage covers a wide range of primary literature on a topic by subject area. retrospective. देखो आपको कहीं देला retrospective माने एथिरे कौन होचे पुराना past literature बा older data सहित current material both cover करे. selective. compilers select only significant primary source, सब गुडा primary source नहीं आंते. next, no new knowledge, widely used for background information, जेंदी student researcher ए समस्त यूज करन. एग्जांपल कोन आछिबो? फर्स्ट आसला एनसाइक्लोपीडिया. देखो एनसाइक्लोपीडिया रे बहुत ही कंफ्यूजन रहे कारण एनसाइक्लोपीडिया सेकेंडरी सोर्स रे भी आसे आ बहुत जगह रे कोन ताको टर्शियरी सोर्स रे भी देछि. तो सेकेंडरी सोर्स रे काहे आसे जेतेबेले से प्राइमरी सोर्स ता कोन ऑर्गेनाइज करी की कंप्रेहेंसिव समरी प्रोवाइड करे तारो बा गोटे स्पेसिफिक फील्ड रो ते सेटा कोन जिवो सेकेंडरी सोर्स रे चल जिवो. देन डिक्शनरी आसीगला, सेतिर कोन हुए टेक्निकल टर्म्स गुडा का ऑर्गेनाइज करे जायछि, वर्ड गुडा डिफाइन करे जायछि. देन टेक्स्ट बुक्स कंपाइल्ड फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल, रिपोर्ट ए सब गुडा कोन होय जिवो सेकेंडरी. देन रिव्यू आर्टिकल्स, जे गोटे आर्टिकल पब्लिश हेछि ताकू तमे कोन गलो इवैल्यूएट कलो और ता ऊपर रिव्यू आर्टिकल गोटे पब्लिश कलो. तो सेटा कोन तमे गोटे प्राइमरी सोर्स नेलो आ तमे ता ऊपर निजर ओपिनियन देकी एनालिसिस करके तमे पब्लिश कलो तो एडा ही जो कोन सेकेंडरी सोर्स. देन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स एगुडा जेतेबेले कोन एब्स्ट्रैक्ट्स गुडा का बा ब्रीफ समरी गुडा पब्लिश हुए सेटा एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज. देन इंडेक्सिंग सर्विस लिस्टिंग प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट विथ सब्जेक्ट ऑथर इंडेक्स विदाउट एब्स्ट्रैक्ट, तो सेटा ही जाउछि इंडेक्सिंग सर्विस. देन कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग, पब्लिशर्स कैटलॉग, बुक सेलर्स कैटलॉग, ये सब जो लिस्ट ऑफ होल्डिंग्स गुडा का एगुडा भी सेकेंडरी जीवो. देन ट्रीटीज. ट्रीटीज होछि ना ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी लिटरेचर, जिंदे ट्रीटीज ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री गोटी एग्जांपल देछि. देन एनुअल रिव्यू, ईयर वाइज रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इन ए फील्ड, एग्जांपल एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देन आसिला मोनोग्राफ माने स्कॉलरली बुक्स ऑन स्पेसिफिक नैरो टॉपिक कंपाइल्ड फ्रॉम रिसर्च सोर्सेस, सेगुडो मोनोग्राफ कहबा. देन सीएएस आसिला, सीएएस होछि हमरा करंट अवेयरनेस सर्विस. ओके, करंट अवेयरनेस सर्विस कोन करे? टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस, एसडीए अलर्ट, जर्नल अलर्टिंग सर्विस, यूजर्स ऑफ न्यू प्राइमरी पब्लिकेशन, एडा भी हमरा सेकेंडरी रे जीवो का एथरा नुवा इंफॉर्मेशन क्रिएट होनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन विषय से किछटा इंफॉर्मेशन दोस. देन आसिला हमरा टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो टर्शियरी सोर्स आर कंपाइलेशन और डाइजेस्ट दैट कंसोलिडेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो टर्शियरी सोर्स तैयारी हुए मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी रो रिसोर्सेस को नहीं की तो कंपाइल करी तैयारी करे जाए. दे एक्ट एज ए फाइंडिंग एड directing researcher and primary secondary sources rather than containing original information. The tertiary कौन को है? Where to find the information, not what the information is. कारण आमे प्राइमरी और सेकेंडरी रू नहीं हिचु ताको ऑर्गेनाइज करछु ताको डाइजेस्ट बा कंपाइलेशन करछु जा द्वारा कि अन्य मानन को हेल्प हे परियो. देखो तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन अछि टर्शियरी सोर्स रो? फर्स्ट हला कंपाइल्ड, made by gathering and consolidating information both from primary and secondary sources. Then asila finding aid. Primary purpose is to help locate other sources. They guide, not inform. No original information. जेहेतु आमे नहीं छु primary secondary रू. Then comprehensive listening.
means cover broad literature systematically. Well organized can be used as a quick reference tools ମାନେ deep reading ନାହିଁ but fact finding ପାଇଁ use କରିପାରିବା. High utility value because it save a significant time of researchers. Our relevant sources को ही point out करे. Use extensively in reference service. Librarian mostly use tertiary resource for answering ready reference queries. Then may be current or retrospective माने पुराना और नया डाटा both cover करे. नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट देला इट कैन बी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माने फॉर्म रे थाई पारे ट्रेडिशनल आल्मनाक ईयर बुक्स बर्तमान कोन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को आसी गलन अरे एग्जांपल्स गुडा देखो कोन कोन हे बिब्लियोग्राफिक माने लिस्ट ऑफ बुक्स आर्टिकल्स इंडेक्सेस एग्जांपल दिस ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स टू इंडियन पीरियडिकल लिटरेचर देन आसिला आल्मनाक annual compilation of statistics, fact and data on various topics, then yearbooks, annual volume providing updated information on a subject, then handbook, quick reference compilation, factual data, formula and statistics, then directories. Directory is your compilation of information about organization, people or institution. Then the world of learning. देखो बहुत समय रे कौन है एग्जाम रे क्वेश्चन पचार था वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ता साइड रे तुमको मेज द कॉलम दे देथिबो ईयर बुक हैंडबुक डायरेक्टरीज एमिति भी दिए ता एगुडा को टिके मन रखियो मु ट्राई करबे आर अलगा किछ आनियो पे बा तुमको लिस्ट बा चार्ट प्रोवाइड करिया पे जादर की मन रखियो इंटरनेशनल हुज हु डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज इन इंडिया सेडा तो पचारे बहुत समय रे किए पब्लिश करे ता रिलेटेड भी पचा दे था गाइड्स टू लिटरेचर example guide to reference books, guide to Indian periodical literature, then union catalogs and a combined catalog showing holding of the multiple library. Then database, aggregator collection of records from multiple sources in the EBSCO, ProQuest, Scopus. Then encyclopedia. Encyclopedia are most commonly classified as secondary sources. But किसी जगह कौन ताऊ tertiary भी कारण फाइंडिंग एड पे यूज हुए तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन से को बेसिस रे पचारछि ताकू देखि तमे आंसर करियो पड़ियो कारण गूगल रे करियो तम एनसाइक्लोपीडिया टर्शियरी देखैबो आ किछिटा बुक्स जदी रिसोर्स देखिबो सेथिरे कोन देछि एनसाइक्लोपीडिया सेकेंडरी देछि बुझला तो एटा टिके कंफ्यूजिंग आसी पारे देन डाटा बुक्स कंपाइलेशन ऑफ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल एंड टेक्निकल डाटा बुक्स गुडा को भी कोथरे आसीबो टर्शियरी सो ओवरऑल आमे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी देखि सारलु तो तार जदि कंपैरिजन करबा तो कंपैरिजन टेबल ही देखि दबा आ प्राइमरी होचे ओरिजिनल फास्ट हैंड सेकेंडरी डिराइव्ड टर्शियरी कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन एडा अनप्रोसेस्ड प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हाईली कंपाइल्ड देन रिगार्डिंग नॉलेज एठी न्यू इंफॉर्मेशन मिले अन्य दुईटा रे न्यू इंफॉर्मेशन किछि मिले पर्पस रिपोर्ट एंड फाइंडिंग गाइड्स act as a finding aid. Organization, it is scattered था systematically organized, it is well organized. Then searchability जो देखिबा केते जल्दी हमें जिंस सर्च करि परिबा एथिरे कोन हबो अनइंडेक्स था तो डिफिकल्टी हाई रहे एथिरे टिके रिलैक्सेशन एटा बहुत सिंपल देन करेंटनेस जो देखिबा मोस्ट करेंट स्लाइटली लेस करेंट रेट्रोस्पेक्टिव बट बहुत जगह रे ए भी रेट्रोस्पेक्टिव था then example journal article thesis patents research data encyclopedia textbook abstract then tertiary bibliographics almanac directories yearbook handbooks ऐसे गुड़ा आछे then researcher creating organized data student seeking background information tertiary librarians for reference service then mostly के use करे author researchers publisher by information agencies tertiary da publisher of librarians okay so itila basic comparison between these primary secondary and tertiary source of information then jodi ame dekhiba non documentary versus documentary sources so akko ame kon gochu different categories रे classify कर देछु देखो documentary sources रे कोन आसियो
इनफॉरमेशन रिकॉर्डेड इन ए डॉक्यूमेंट बा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे अछि ताको हमें डॉक्यूमेंटिंग सोर्स रे क्लासिफाई कर देबा जोटा प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज फर्स्ट असला टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स देन नॉन टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स देन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स टेक्सचुअल रे कोन आसीबो बुक्स मोनोग्राफ्स journals periodicals thesis dissertation research paper government documents annual report newsletter ऐसा गुड़ा टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल आसला मैप atlas chart diagrams photographs audio recordings video recordings microforms जेमि माइक्रोफिल्म बा माइक्रोफ्लिच आस जाउची इलेक्ट्रॉनिक रे आसीबो ई बुक्स ई जर्नल्स ऑनलाइन डाटाबेस cd-rom वेबसाइट एंड वेब पेजेस जेतले मूव करबा नॉन डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस एथिरे आसीबो ह्यूमन सोर्स रे आसीबो जेने सब्जेक्ट एक्सपर्ट रे कोन आसीबो स्पेशलिस्ट बा इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल भी कोइ परिबा देन टीचर्स एंड प्रोफेसर कंसल्टेंट्स एक्सटेंशन वर्कर्स मेंटर्स सुपरवाइजर्स ये सब आसीबो देन इंस्टीट्यूशनल बा ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स आको को जाय एथिरे आसीबो libraries and information centers, museum art gallery, research organizations, government department, academic institutions, professional association, societies, think tank, ऐसा गुड़ा जो है. Then mass media, radio and television program, newspaper, print, online, then films, observational source, laboratory experiments field and survey observation एडा हला हमर डॉक्यूमेंटरी और नॉन डॉक्यूमेंटरी सोर्स रो कंपैरिजन टेबल कोइ परिबा बेसिक क्लासिफिकेशन भी कोइ परिबा एबे हमें आको टिके डिटेल रे देखिबा डॉक्यूमेंटरी सोर्स का को जाय रिकॉर्डेड फिक्स्ड एंड प्रिजर्व्ड इन अ डॉक्यूमेंट जोटा प्रिंट ऑडियो विजुअल बा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है परे सोर्सेस डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड and the information be stored retrieved and used repeatedly by different users at different time देखो डॉक्यूमेंटरी एग्जांपल जो देखिले से गुडा ही अछि बुक्स मोनोग्राफ्स जर्नल periodical thesis ए सब टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स नॉन टेक्सचुअल रे देखिले इलेक्ट्रॉनिक बा डिजिटल डॉक्यूमेंट देखिले देन नॉन डॉक्यूमेंटरी sources of information where the information is not recorded in a document it can be conveyed through people, organization, event or direct experience. They require direct contact with the source, personally by phone or through observation. Documentary sources are important for tacit knowledge, current awareness and specialist expertise. Then non-documentary example गुड़ा देखो human रे देखिले specialist teachers, professor ऐसा गुड़ा institutional library, research organization association societies observational रे laboratory experiment field survey clinical observations okay ये सब गुड़ा आछे आ रिगार्डिंग सेपरेट गोटे गोटे टॉपिक्स अछि तो आगुआ जो अपकमिंग वीडियोस रे डिटेल रे देखिबा किछि क्वेश्चन अछि बेसिक रिवीजन पय करनबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखो एडी एगुडा सेकेंडरी हेगला एडा इज अ प्राइमरी रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स A bibliography can be classified as which type of source? Tertiary. Okay. Then an encyclopedia is classified as secondary. Which of the following is a non-documentary source? Non-documentary कौन आसियो हमरा? Expert or subject specialist. Patents are classified as primary source कारण original information fast provide करे. A thesis or dissertation is classified as primary source. Which of the following is a tertiary source? Almanac. Abstracting service is classified as secondary source. Abstracting, indexing, ये सब गुड़ा कौन secondary चल जाए. Which characteristics is a unique to primary source? Contain new or original knowledge. The microfilm is classified as which type of source? Documentary. Microfilm, microflitch. Which of the following is an example of a secondary source? Textbook. पेटेंट लैब नोटबुक ए सब गुड़ा कौन प्राइमरी चल जाए almanac डा टर्सरी कॉन्फ्रेंस पेपर आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सोर्स ए डायरेक्टरी
is classified as directory कोन हो जिवो सेटा हो जे हमरो tertiary source so tertiary source देछि which is characteristics of secondary source organize and guides to primary sources technical reports from DRDO or ISRO are classified as primary source which of the following is a documentary source map a yearbook is classified as tertiary source review articles are classified as secondary source which of the following is not a primary source index to periodicals patent ए सब गुडा कोन प्राइमरी चल जाए एडा ही कोन हो जाउछ lectures and seminars are examples of which type of resources non documentary handbooks are classified as tertiary source which of the following is classified as a primary source standards and specifications the main purpose of tertiary source is act as finding aid to other resources trade literatures is classified as primary source which pair is correctly matched thesis primary source preprint are on archive are देखो preprint दा कोन हो जिवो सेटा हमरा primary source रे आसजिवो which is a characteristics of tertiary source act as finding aid to literature museum and art galleries are example of which type of sources non documentary sources government document like census of data are classified as primary sources science citation index classified as secondary sources so ए वीडियो रे एतिकी आशा करूँ वीडियो टी भल लगी किछिटा कंप्लेन थिला रिगार्डिंग किछि पेज लोड होनी वेबसाइट रे देखो मु ट्राई करूँ धीरे धीरे गोटे गोटे अपडेट्स आनिया पे गोटे टाइम रे तो सब गुडा हेई परियोनी जदि कहा पाखरे किछिटा ओल्ड क्वेश्चन पेपर अछि जो माने हेल्प करियो चाहूछ तो मते सेई गुडा मेल कर दियो मोर मेल आईडी रे मु से गुडा कोन करबी कंपाइल कर देबी वेबसाइट रे जा द्वारा कि तमर भी हेल्प हे जिवो अन्य स्टूडेंट्स मानो भी हेल्प हे जिवो सो ये वीडियो को लाइक और शेयर करंतु थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।